अमरीका और पाकिस्तान गुज़श्ता 18 माह अफगान अमन अमल से मुतालिक राब्ते में है। वज़ीर ख़ारजा, दिफा और CIA पाकिस्तान से राब्ते में हैं। इस वजह से पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी आई। अमरीकी इनखला के बाद तनाज़ा हो सकता है। तालिबान ने दर्जनों अजला पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में कशीदगी बढ़ती देख रहा हूँ। पाकिस्तान में अमरीका के साबिक सफीर रिचर्ड ऑल्सन की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, कश्मीर पर अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका चाहता है कि ये मसला बातचीत के जरिए हल हो। मुझे नहीं मालूम इमरान खान को सदर बाइडन फोन क्यों नहीं कर रहे। The United States and Pakistan have been more aligned perhaps for the last 18 months because of the Afghanistan peace process. With the United States' decision to put pursuit of a peace process as the central element of U.S. policy with regard to Afghanistan, which happened really in the fall of 2018 with the appointment of Ambassador Khalilzad. Since that time, there has been a degree of alignment between the United States and Pakistan that has not existed before then. Before then, I think there was we were very much working at cross purposes in Afghanistan. So I think that has created some positive momentum in the relationship. So far, they have seized a number of districts, rural districts in the countryside. And I think they will continue to test the Afghan government, especially after the U.S. The withdrawal of foreign forces this summer. So I think that at least in the short term, some intensification of the conflict is likely.